we should learn about the fake news, right? Okay. Now, why we need to stay away from the fake news, right? Okay, sometimes it's a matter of fun for us, entertainment, and so many other things, right? But let me tell you, and I think Professor Pabi would be more knowing about this because he has been a working journalist throughout. So there are a few sections in Indian Penal Code which directly punish you, right? And I'm not saying that these sections can be applied on you. They have actually been applied on the working journalists, right? You search in Google like journalist jail for the fake news or false information, and you will find a lot of sections which have been applied. So these are the 153 again, promoting enmity between religion groups, and I will not explain much. You all know this. But yeah, 153 says that grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc., etc. Right? Okay, fine. But if you take a closer look at our the content of our messages, they are all filled up with this, either this way or that way. Yes or no? Do you agree with this? राइट किसी पे भी कमेंट करना, किसी जोक में किसी को एक स्टीरियोटिपिकल वे में किसी पार्टिकुलर कास्ट को डेनिग्रेट करना, ये हम सब लोगों के मैसेज में होता है, राइट? सो वी आर straight away moving into the 153 then. Section 505 punishes person who spread rumor through their statement, right? ये बड़े अच्छे से लगाया गया है. 505 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, किसी भी चीज पे लगाया जा सकता है. यू कैन पुलिस की पावर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं. सेक्शन 34 ये अब सबसे ज्यादा डेंजरस ये है क्या? It says that if a particular crime has been committed by 10 people, so while acknowledging that all the 10 people may not be having may not have contributed to the crime equally, right? 2-3 लोगों का ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लेकिन 10 के 10 को वही सजा मिलेगी जो उन 2 को मिलेगी, यानी सबको सिमिलर सजा मिलने वाली है इसमें. This is more dangerous than section 34. And 499 is the defamation, right? If you defame somebody without basis or with a malified intention, without evidence, right? So these are all the sections which have been applied on working journalists. What to talk about the common man and people like you and me, right? So just be aware about this. Recently आपने देखा होगा वो जो लाल किले पे अटैक हुआ था, उसमें एक वो ट्रैक्टर से एक ट्रैक्टर के पलटने से एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी. So Rajdeep Sardesai and I think this Shashi Tharoor, उन्होंने ट्वीट किया कि पुलिस की गोली से वो ट्रैक्टर पलटा है और उसकी डेथ हुई है उस लड़के की. बाद में पोस्टमार्टम में पता चला ऐसा कुछ नहीं था, बट फिर भी पुलिस ने मतलब मेलाफाइड इंटेंशन के तौर पे फेक न्यूज के चलते उन पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए लगा दिया, राइट? एनएसए इस केस में लगता ही नहीं, बट सी मैं जो आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, police is now proactive, right? So we have to be aware about that. So now this is a broad why that we should be knowing about the fake news and we should stay away, right? Okay, so now we should be all media literate people. This is slightly academic definition, but you don't read full definition, just focus on the red part of it, right? It's a skill to gain access to the media. Okay, part 1. So we all have access to the media, right? We know how to operate the media, and data is so cheap. We are operating on the world's cheapest data, so access is already there. But do we know how to interpret and critically evaluate different aspects of media messages, right? Do we know that? I think no, because the industry of fake news is so sophisticated. I tell you, you won't be able to distinguish the genuine news from the fake one, right? In every aspect, right? So media literacy is very very important. कितने लोगों ने अभी एनडीटीवी की वो उसके बारे में सुना है? व्हाट वाज द नेम? निधि राजदान. यस, आपने अखबार में पढ़ा होगा. आप शायद जानते हैं, उसमें निधि राजदान सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ एनडीटीवी, कोई छोटे मोटे नहीं. उसको एक ऑफर आया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कि आप हमारे यहाँ एज ए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर ज्वाइन कर लें. ओके, तो उसने ऑफर को इवेलुएट किया. 5 to 6 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज वर डन, सब कुछ हुआ. और बाद में जब वो छुट्टी भी उसने अप्लाई कर दी एनडीटीवी से, वो छोड़ भी दिया. और बाद में जब जाने का टाइम आया तो पता चला वो सब फेक था, वो फेक ऑफर था. In the meantime, Nidhi Razdan was on the top of the world. She used to address many
public seminars and like that, and then finally she had to cut a sorry figure. This I'm talking about NDTV's top journalists, right? So you won't be able to tell the difference between, you know, such and jhoot. So media literacy should be very, very high. So we should be working on this interpretation and critical evaluation of the different aspects of the media. So abhi hum log kuch dekhenge, and I think without taking much time, I should quickly jump over to the real time, you know, exercise, right? Otherwise, what are the different types? What are the, you know, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं रखा हुआ है, हाँ. But yes, मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहूँगा. Misinformation is a loosely, you know, interpreted term, right? हम लोगों के लिए मिस इन्फॉर्मेशन भी वही है, डिसइंफॉर्मेशन भी वही है, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि इसका फर्क क्या है. सो मिस इन्फॉर्मेशन इज व्हेन यू unintentionally forward a fake news, right? That is misinformation. आपको पता नहीं है, आपने आया आगे से forward किया and finish. That is misinformation. But there is another one, that is disinformation. It is intentional dissemination of the fake news, right? Political parties पे allegation लगता है कि ये लोग ऐसा करते हैं, right? So there is a difference between miss and dis. पुलिस की नजर में दोनों एक जैसे हैं, right? So there is no excuse in the law कि भाई जो आपको इसमें बचा सके. But there is another third kind of misinformation, that is malinformation. It comes under the disinformation category actually. And now see, genuine information is used to harm the religious groups or socially disadvantaged people, right? Information is genuine, perfectly okay, but it has been given a different spin, right? It has been given a different context, so that some religious groups like Muslim or other minorities groups, they may be harmed. For example, अभी recently आपके पास लॉकडाउन में लास्ट टाइम वीडियो आया होगा जब ये मरकज वाला केस चल रहा था निजामुद्दीन दिल्ली में. तो एक वीडियो सब लोगों के पास सर्कुलेट हुआ जिसमें कुछ मुस्लिम किड्स जो हैं वो जो झूठी प्लेट्स हैं उसको वो ऐसे चाट रहे थे, राइट, इनसाइड द मॉस्क, ऐसे ऐसे करके. तो उसके नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ था, देखिए ये मुस्लिम इंडिया को कोरोना फैलाने में जुटे हुए हैं, दे हैव बीन गिवन द स्पेशल ट्रेनिंग कि भाई कोरोना फैलाना है, एंड यू नो ये सारा सब कुछ नैरेटिव उसमें डाला गया. ओके, जब हमने उसको वेरीफाई किया तो ये पता चला कि एक मुस्लिम कम्युनिटीज में पार्टिकुलर एक आई डोंट नो, आई शुड यूज द वर्ड सेक्ट, और एक स्पेशल में होते हैं, बोहरा संप्रदाय होते हैं, इसमें जैसे सुन्नी होते हैं, सिया होते हैं, ऐसे शायद बोहरा संप्रदाय का एक वो ट्रेडिशन है कि जहां भी कम्युनिटी फीस्ट होता है तो उसके बाद जो लोग थालियों में थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, सो दे डोंट बिलीव इन द फूड वेस्टेज. तो उसको वो क्या कर रहे थे, उसको खा रहे थे, सो दैट फूड इज नॉट वेस्टेड, राइट? फूड खराब ना हो, वेस्ट ना हो. अब कितनी पायस चीज है, कितना कितना पायस थॉट है, इजंट इट? बट उसको डिफरेंट स्पिन दे दिया. जेन्युइन इंफॉर्मेशन बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल सही है, बट वो दूसरे तरीके से पेश की जाती है. तो आपके सामने अब मैल इन्फॉर्मेशन है, डिसइंफॉर्मेशन है और मिस इन्फॉर्मेशन है. प्लीज यूज देम जुडिशियसली इन द डिफरेंट कंटेक्स्ट, राइट? सो ये आपसे वो है. ओके, वेरी क्विकली अभी. ओके फाइन. सो 7 टाइप्स और 8 टाइप्स की ब्रॉडली फेक न्यूज होती है. द फर्स्ट इज सटायर, यानी सटायर के फॉर्म में. देखिए, टाइम्स नाउ बिकम्स टाइम्स हाउ, राइट? डू यू थिंक एज मच? बिकॉज पीपल तो वो एक बार देखते हैं जस्ट हाउ की तरह नाउ लिखा हुआ है एंड इट्स ओके फाइन, उनके लिए सब कुछ ठीक है. और टाइम्स ऑफ इंडिया बिकम लाइन्स ऑफ इंडिया. कैसे भी, ये थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए है, पीपल नो दैट दीज आर पैरोडी अकाउंट्स, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चल जाता है. दिस इज नॉट हार्मलेस, राइट? बट यहाँ से हार्मफुलनेस शुरू होती है, इम्पोस्टर कंटेंट. सो इसमें क्या होता है कि जो सोर्स एट्रीब्यूशन किया जाता है दैट इज रॉन्ग एंड दैट इज मैलिशियस. बट सॉरी, सोर्स एट्रीब्यूशन है जैसे बीबीसी और सीएनएन को, दिस इज राइट, बट द इंफॉर्मेशन विच इज शेयर्ड बिलो इज फेक. सो ये बीजेपी को 4th लार्जेस्ट करप्ट पार्टी बोला गया एक सर्वे में जो सीएनएन और बीबीसी ने किया, राइट? इट वाज फाउंड टू बी फेक. आपका एट्रीब्यूशन किया गया सोर्स को वो बिल्कुल सही था, राइट? लेकिन इंफॉर्मेशन गलत है, सो दिस इज इम्पोस्टर. अब ये जो दंतेवाड़ा में 2010 में आई थिंक अटैक हुआ था, उसकी बॉडीज हैं, लेकिन इसको क्या बोल के
प्रचारित किया गया ट्वीट्स में that these are the dead bodies of our पुलवामा martyrs, right? And ये शायद 14 फरवरी को हुआ था, तो उसमें शहीदों के नाम से इसको जाना चाहिए। इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है, बॉडीज आर ओरिजिनल, सब कुछ पीछे ठीक है, बट ये गलत कंटेक्स्ट में इसको पेश किया गया है, राइट? देन या इट इज ए दंतेवाड़ा मैसेकर एक्चुअली. Then this content is totally fabricated up till now, which these false context and these imposter content, they were at least having some kind of truth, right? BBC logo was okay, CNN logo was genuine, but in the fabricated content, every single piece of information is fake, right? Now this sheikh was purportedly, quoted in the news, fake message that okay, Saudi prince lost $350 million US dollars, 5 wives at a casino, right? It's totally fake, right? Okay. Then is manipulated content. When you crop something, right, and you present something in a different way. So if you see the picture from 3 perspectives, then you will be having 3 different interpretations, right? In the first, brutality of the American forces. Second is that okay, I mean they are genuine people, though they are carrying the gun. Third one is that they are totally genuine people, right? Very kind, very compassionate. So this is how the reality is constructed through the manipulated content, right? And there is a misleading content. I'm sorry, misleading contents meaning thereby, sometimes you see the videos on the YouTube. I mean the headline doesn't match the content inside. Yes, देखिए धमाका, ये कोरोना को इस दुनिया से खत्म कर देगा 1 मिनट में. यू आर वेरी एक्साइटेड, वाओ. और जब आप उसमें देखते हैं उसमें कुछ भी नहीं मिलता, बट देयर पर्पस इज सर्व्ड. नहीं, उनको आईबॉल्स कैच करना था, आपने पूरा वीडियो देख लिया, एंड द वीडियो क्रिएटर इज पेड बाय समथिंग, इजंट इट? ऐसा होता है ना, बिकॉज ये लिंक इकोनॉमी है, मोनेटाइज होती है हमेशा, राइट? सो नाउ these are all falsified visuals, like a monkey, hitting the lion with a stick. It never happens. These are all created, right? So this is a misleading content. So okay, fine. So these were now 7 types of fake news, and all the news info which you are getting, all the information which you are receiving as forwards on your social media or WhatsApp, it falls into either one or in many categories, right? So yeah. So there are 8 reasons why misinformation is created, right? Why in the first place people create it? So first is the act of poor journalism. Some mistake, genuine mistake, maybe there, like Rajdeep Sardesai, declared Pranab Mukherjee dead 1 week before. Do you know this? Oh, he's a very senior journalist, but it may be an act of poor journalism. Okay, fine, but overall intentions are good. It may be a parody, like आज तक पे आता था so sorry बोल के. So the third one is to prove or to punk, and fourth, passion. The people have passion for misinformation, right? जब तक वो कोई misinformation फ्लॉट ना कर दें सोशल मीडिया पे, तब तक उनको चैन नहीं आता. They have a passion for that. Then is partisanship. The one side वो किसी उसकी उस पे रहते हैं, आइडियोलॉजी पे या किसी पॉलिटिकल पार्टी की एफिलिएशन पे. प्रॉफिट के लिए भी करते हैं, रादर प्रॉफिट एंड आइडियोलॉजी, दे आर द टॉप 2 बिगेस्ट मोटिव्स, राइट? बिकॉज आपको शेयर करने पे यू गेट पेड बाय इफ द यूट्यूब वीडियो इज गेटिंग एनफ अटेंशन. देन इज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. आपने देखा होगा ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम or during the any crisis moment, the industry of fake news or the misinformation, it flares up, isn't it? You start receiving so many messages day in and day out, right? And then last is the propaganda. The propaganda machine also uses misinformation. So these are the 8 reasons broadly. And what to do then? We should verify and verify, right? So these are the 3 formats, that is text, image, and video, in which you can get the information in, right? Either it can be a text message or a picture or a video, right? Third one is the sound file, but we as a fact checker cannot
verify a sound file, right? Only the I think there's a lab in Hyderabad. Professor, probably you must be knowing more about that. There's a central forensic lab. Yes, yeah, central forensic lab in Hyderabad, and that's their work actually, huh? So it's not possible for us. So we limit ourselves to these three formats. So, and okay, fine. So let's take a few examples. For example, you receive a particular message which is in the text form, right? And the message is that okay, जब से हमने वो पिछले 22 मार्च को थाली बर्तन पीटे थे, आप लोगों ने भी किया होगा घर के बाहर वो थालियां और तालियां बजाई थी हम लोगों ने अपने वर्कर्स के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए, राइट? So on the very next day, 23rd March, the message was floated on WhatsApp that okay, the people who clapped across the world, because we have some diaspora community also outside living in the other countries. So all these people, they clapped, so it created a vibration in the atmosphere, and that vibration was detected by the NASA SD-13 satellite, right? And after that, COVID intensity has come down, right? This was the message floated on the very next day. So it's very good message, and you know, भारत देश महान, इसको सबसे आगे तक पहुंचाएं, वो जो भी extended language होती है मैसेज की, तो वो उसमें था. Okay, so let me tell you, there are two ways of analyzing or verifying a particular information. From now onwards, please listen to me very carefully, because ये अभी practical session आपका शुरू हो रहा है. So the organic method, which you can, you know, read and decide yourself without the help of any tool that, okay, it is fake or genuine, right? So just read that message carefully from the first word to the last one. If the message has so many mistakes, so many question marks, sign of exclamations, it is a suspicious message, right? Point one. Point two means if the message has been colored at various places just to, you know, draw attention, it is a suspicious message, right? Third one is if it you know, belongs to some nationalism kind of thing, that India Mahan, we are good, Hindus great, this that kind of thing, it is even more suspicious, right? And when the message has the last line like इसको ज्यादा से ज्यादा forward करो, कोई फायदा होने से रह ना जाए, now it is पक्का fake. Yes or no? This is a organic template, right? to verify the text matter. Okay, let's come to the technical part of it, right? So I'll share very briefly and very you know, in an easy manner, that after this session you can verify yourself. Okay, so tell me whether screen is visible. Ranjana? Yeah. Okay. Right. Yeah, Google. Yes, sir, it's visible. Yes. So this is now the actual practical class. So the message is there before you. I mean, you are reading it. First of all, you do one thing. You extract any 5 or 6 keywords, random keywords out of that message, right? For example, NASA, COVID, right? Clapping, satellite, right? So these are the 4 keywords that I extracted out of the message which I just read, right? It was a NASA satellite, COVID, clapping, satellite. Okay, let's search. Now you are getting 49 results, right? Fact check. Fact check means this has been verified. Verified means NASA satellite did not show any coronavirus retreat. Simple. Got my point? Huh? Because people have already fact checked this for you. So there are high chances that by the time you get the message, it's already been debunked by people and it has been put on their website. And when you check like this, so it will straight away fetch that web page for you. So it is telling me now that Outlook has verified this message, checked this message, and it was found to be fake one. India Times has also done that. News 18, One India, and I think India Today also, Asian Age also, so many, right? Okay, so it became possible with the minimum results, that is 49, when you entered 5 or 6 keywords, topical keywords out of the message, right? If the keywords are not giving the right results, just tweak them a little bit, right?
try different keywords. Okay, even if things are not happening, don't worry. So sometimes Google doesn't give you good results, right? So go to factchecking.in. This is the search engine created by me, right? This is my own creation. And okay, now enter COVID NASA satellite clapping. And yeah, so you will get only 4 results, right? And all of these 4 results are from the India's top 20 fact checking websites. And whatever result you are getting here is absolutely 100% genuine and credible. Just believe this result as such, because it is not using the Google technology, right? Google brings whatever web page, websites, etc., right? It finds those keywords on, isn't it? It doesn't have its own mind, isn't it? So in Google, even in the 46 results, you have to do your own research kind of thing. But if you go to my search engine, it's free for you. I think I'm in, and it is not being supported by any kind of ad, right? I'm not making money out of it, right? It's just only for the fact checking community. So factchecking.in, just enter the keywords, just press enter, and it will give you limited results, 4 results. Now it is telling me that India Today has fact checked it, and Boom Live also. No, Boom Live is in the different context, but yes, this has been fact checked by India Today. Got my point, huh? So if you click on the image, then if few images are also connected with the message, you will find them here. So it will help you very in verifying, isn't it? So as far as text is concerned, that's it. That's all. I mean, this is the only verification. You don't need much other than this, right? Well, if you are more interested, then I can tell you one more command in the text verification. Are you interested? Tell me. Yeah? Yes, please. Okay, that is, uh, let me open Google first. Okay. So out of the text message which you receive, copy uh, any group of words or a particular sentence, right? And search for that sentence in double quotes in Google, right? So, for example, NASA. Now, I don't know the exact sequence of the words from the message, but uh, copy a particular sentence from the message, paste it here, put it in the double quotes, and press enter. So it will bring all the results on the web pages across the internet, which are having those sentences, right? And then there you can verify whether it is right or not. Could you get it? Students, Ranjana, could you get it? Huh? It's so simple actually, huh? Nothing doing. It's known as the double quotes search, right? So as far as text is concerned, this is it. Should we come to the image search now? Image is very important, because according to a research, uh, around 50% of the fake news is circulated in the form of an image. And the second comes the text, third comes the video, and fourth comes the audio one, right? Video, because people in the rural areas don't have that much bandwidth now, so it takes time to load and all other things. So that's why text is good for them. So image is undoubtedly the number one misinformation. Okay, now see, I have got a message now in the form of an image, right? And somebody has sent me this image, which I'll be displaying before you. And he has said, okay, now see, this is a very good ABC university, and I have opened this, and it's very good campus and good building.
enclosing the snapshot of the building, right? So I should check it. Yeah, I should check it whether he or she is speaking truth, because एक बात मैं शुरू में बताना भूल गया आपको आईपीसी सेक्शन में कि लॉ जो होता है, लॉ की एक बड़ा क्लियर एक क्या बोलते हैं उसको, कभी सर मैक्सिम बोलते हैं उसको या एक फाउंडेशन बोलते हैं कि जब तक कोई कसूरवार नहीं ठहराया जाता है तब तक वो इनोसेंट रहेगा, राइट? इफ यू आर नॉट proven guilty up till then you are until proved guilty. Yeah, until proved guilty, right? Okay. But misinformation में उल्टा समझिए आप इसको, right? Every information which you are receiving is fake until proven otherwise. ये उल्टा है पूरा, right? चाहे वो आपकी मदर ने, फादर ने, किसी ने भेजा हो, right? इवन आपके यूनिवर्सिटी ने भी क्यों ना भेजा हो, राइट? बट एज ए क्रिटिकल माइंड यू शुड एनालाइज कि ये सही है क्या? ओके, यू चेक इट, नो प्रॉब्लम। जिसने ही भेजा उससे बात कर लीजिए, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स हैं तो उन्होंने तो सही ही भेजा होगा ऑफिशियल ग्रुप पे, राइट? सो ये एक क्रॉस चेकिंग का एक हमारा एक क्रिटिकल माइंड होना चाहिए। सो कमिंग बैक टू द इमेज काइंड ऑफ थिंग, सो इमेज एक मेरे पास आई है तो मैं क्या करूंगा, images.google.com पे जाऊंगा एंड आई विल upload that image here from my computer, and it was on the desktop, I think, ABC. Okay, so ABC University, I have uploaded that image on Google. This was the image, right? ABC University, you know this university, huh, students? Yeah, Nisha, do you know this? Nisha Kapoor, ABC University? Yeah, of course. See, I haven't entered the campus Shulini University Solar. No, I haven't done that, right? See, the thing is, when you upload something on Google Image, right? So it matches that image with its available images, right? Or it crawls the images on the internet and finds the similar patterns, similarity, right? And it auto guesses something. So I did not enter this here. I did not enter because this is an image of actually Shulini University. You see the results, shuliniuniversity.com. This is your official website. This image is available there. So how it can be the ABC University? It is your Shulini University, right? But आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूँ, ये Google ऑटो गेस करता है। दिस इज इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन, राइट? सो universities, quite, it's 5 to 6 year olds now. 11-year-old now. 11-year-old now. So now Google has fairly good amount of information about your university, right? So it can auto guess very easily. And when you upload that, so it matches and displays this before you from its own side. So now there is no doubt that it is not a ABC University, it's a Shulini University. Fine. But not all the images have this kind of privilege, right? Sometimes you enter the image or you upload the image in Google and it will not display anything here, right? It will be confused, right? Nothing. What to do then? Okay. आपको ध्यान एक चीज रखनी चाहिए कि गूगल जब भी आपको रिजल्ट्स देता है इमेज वेरिफिकेशन में, तो पहले तो वो जो भी आपने इमेज अपलोड किया है उसको टैली करेगा फर्स्ट, राइट? सेकंड में ये कीवर्ड्स, अब ये कीवर्ड्स अपने पास से तो कुछ दे नहीं रहा है बिकॉज इट इज क्लूलेस, राइट? तो इसमें देन यू हैव टू ट्राई योर ओन जजमेंट, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि शुलिनी यूनिवर्सिटी, अगर मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं यहाँ पे डालता हूँ, तो ये कीवर्ड्स मुझे यहाँ पे डालने का परमिशन है, राइट? तो मैं उसके हिसाब से अपना इसको चेक कर सकता हूँ और whether it tallies with my this image or not, right? And if I say like this, okay, ABC University, so now no ABC University, right? ये देखिए ABC University लिख रहा है, इसकी साइट पे चले जाइए आप and there will not be any image like this. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Are you getting? मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ? Then if you have some old image, then definitely Google will give you the 100% right result, right?
it will serve in your plate, don't worry. But if the image is, not that much old, recent image, then you upload that and find out the results underneath. ये जितनी भी ये सिमिलैरिटी आप देखेंगे, इट्स फैचेस द विजुअली सिमिलर इमेजेस, राइट? तो इसको ये बिल्डिंग्स मिली हैं आपकी यूनिवर्सिटी के से रिलेटेड, तो इसमें आपको देखना है पूरा ध्यान से कि कोई मैच कर रहा है क्या। अगर मैच कर रहा है, मान लीजिए कोई मैच कर रहा है, तो आप उस लिंक को खोल लीजिए एंड देखिए फिर जाके क्या वो एक्चुअल वही एबीसी यूनिवर्सिटी की इमेज है जो आपको बोल के भेजा गया था यहाँ पे। अब ऐसा कुछ इसमें मैच हो नहीं रहा है बिकॉज मैंने कीवर्ड्स यहाँ से चेंज कर दिए हैं, राइट? सो जब भी आप इमेज वेरिफिकेशन करें तो ये मेथड मैंने आपको बता दिया है, सिंपलेस्ट मेथड है, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद भी अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फिर किसी भी वेबसाइट पे मान लीजिए आप जा सकते हैं। मैं अपना वेबसाइट खोल लेता हूँ यूनिवर्सिटी का यहाँ पे। Okay. So this is my university's website and वेबसाइट या स्कूल की वेबसाइट पे लगा दिया और मुझे बोला देखो हमारा स्कूल कितना अच्छा है, सो गुड। सो हाउ आई विल verify that? So this is already on the website. I'll click on the right side. राइट साइड में देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा सर्च गूगल फॉर दिस इमेज। बाय डिफॉल्ट क्रोम का फंक्शन है, राइट? जब आप इसको क्लिक करेंगे it will perform the similar image search which I performed by uploading, right? अब चूंकि ऑलरेडी वेबसाइट पे है, आप राइट क्लिक करके वहीं से इसको वेरीफाई कर ले रहे हैं। सो इट इज टेलिंग मी कि ये आपने इमेज अपलोड किया था। सी इट इज ऑटो गेसिंग श्री गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, राइट? सो श्री तो वैसे लगा दिया, अदरवाइज अवर यूनिवर्सिटी नेम इज गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी। नाउ सी ggust.in and these are the university links. If you open this, then you will find the same photograph there. So now it is beyond doubt that it is my university's photograph, not that school's photograph. Could you get it? व्हाट्सएप पे आपको इमेजेस आती हैं, उसको डाउनलोड कर लें आप कंप्यूटर के अंदर एंड देन अपलोड ऑन इमेजेस, गूगल इमेजेस, राइट? तो वो वहां से वेरीफाई हो जाएंगी। द इमेज इज ऑलरेडी ऑन सम वेबसाइट, सम ब्लॉग, क्लिक इट ऑन द राइट साइड एंड वेरीफाई, राइट? इसके बाद ऐसा नहीं है कि भाई इसने आप ये बता दिया और ना चीजें हो गई, ऐसा नहीं होता। बिकॉज कई बार लोग क्या करते हैं, दो इमेजेस को क्रॉप करके फ्यूज करके नई एक सुपर इम्पोज और करके नई इमेज बना देते हैं फॉल्स। उस केस में बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, से बाहर है। बिलीव बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट। टेक्नोलॉजी आपको केवल इंफॉर्मेशन के पास पहुंचा सकती है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव टू डू योरसेल्फ, सिंपल, राइट? सो and 90% of the journalist job is already, we have been trained to verify. टेक्नोलॉजी तो अभी 2-3 साल में आई है। आप अभी सर आप लोग तो क्रॉस वेरिफिकेशन राइट फ्रॉम द डे वन करते ही रहे हैं इसमें, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो करनी दैट पड़ती इज है। एन ऑर्गेनिक वेरिफिकेशन। नाउ द टेक्निकल पार्ट इज एडेड बिकॉज द इंफॉर्मेशन ओवरलोड इज टू मच, राइट? सो दैट इज बियॉन्ड द वेरिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन माइंड, राइट? बट डोंट वरी, 10% ही आपने नया सीखना है टूल्स में, राइट? The traditional canons of the journalistic verification, they still apply to the modern day verification process, right? Okay, fine. So अभी लास्ट का बहुत जल्दी से देख लेते हैं, वीडियो, राइट? हाउ टू वेरीफाई ये वीडियो, so simple, I tell you. Okay, so whenever the video comes to you, just watch it from first frame till last frame, yeah, and try to find some clues inside. Okay, see the background of the video, the person is speaking and somebody is going, somebody is taking out a procession in the background, buildings, landmarks, and number plates of the cars, and
कार्स का वो देखिए राइट साइड पे चलाया जाता है, लेफ्ट साइड पे, बिकॉज कॉमनवेल्थ कंट्रीज पे हम लोग राइट साइड में चलते हैं, कार का स्टीयरिंग होता है, जो बाकी कंट्रीज है उसमें लेफ्ट साइड का होता है। इससे आपको पता चल जाता है कि वीडियो कहाँ का हो सकता है, राइट। ओके, as far as technical verification is concerned, then I recommend कि एक आप यूज करें इसको, InVid Chrome extension है, right? Is it visible? This I have changed the screen now. In InVid Chrome extension, is it visible? Ranjana? Yes, But sir. that's Google. Google is visible. Google. ये Chrome extension नहीं visible हो रहा क्या ये? Oh, Google में you have written that. हाँ, that is visible. So Google okay, search fine. box में शो हो रहा है. अच्छा, InVid Chrome extension के नाम से है ना? Okay. Yeah. Right. So this is a plugin which you install on the Google Chrome, and when you open it, then it allows you to upload that video from your computer, right? So if it is the WhatsApp video, then download on the computer, right, and then upload from there. Or if it is already on some Facebook, Twitter, or YouTube, just copy that URL link and enter there, right? And then press submit. So it will be submitted to the InVid parent website. What it simply does is that it will break the video into various pics. You know ना कि एक वीडियो जो होता है that is composed of so many still images, है ना, frames होते हैं वो सारे के सारे. So इसका काम सिर्फ इतना करने का, उससे ज्यादा ही नहीं करेगा. Okay. Now see, when the video is broken into different images, now it becomes an image verification. Got my point? It becomes image verification. So you click on any one of the image on the right side and search in the Google, and it will again show the similarity. Now this time it will show the videos in YouTube in which that particular image is available. Am I clear on this? Am I clear? Amar Rao, Pragya, Mansi, is it clear now? See, basically we are learning image verification only. We have just broken down that video in different image files, and right click on any one of the files. Usually we right click on the first image file and the last one, right? Because they are watched most in the video. So there's more likelihood of these two pics to be found in the videos online. And when you find those videos online, just go and see the video carefully. And there will be some information written underneath. You should read the comments, and then you match that description with the description which you received in your video. That's a video verification. Traditional kind of verification than a digital verification, right? Isn't it? Huh? So in a very quick span of time, we have learned 3 formats: that text verification, random keywords, then image verifications, means image.google.com upload, and third is video verification through InVid. It's so simple, isn't it? And if it sounds too technical, don't worry. There's one method which applies on all these formats. The method is extract 5 or 6 keywords. It applies to the text file, it applies to the image file, it applies to the video file. Yes or no? Just आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रहे, it's okay, perfectly okay. मतलब अगर आपको बहुत कुछ टेक्निकल लग रहा है अभी तक, इट्स परफेक्टली ओके. बट इतना तो आप कर ही सकते हैं कि किसी भी मैसेज से 6 या 7 तो कीवर्ड्स आप निकाल सकते हैं, राइट? एंड उसको गूगल पे बस एंटर कर दीजिए एंड जस्ट आप उसको देख लीजिए. अगर वो वीडियो का है तो आपको पता है वीडियो सेक्शन को कैसे देखना है, वीडियोस में देख लीजिए, राइट? ये वीडियोस दिखा देगा आपको. यस और नो? यस सर. ठीक है, मैं तो कीवर्ड्स की बात कर रहा हूँ. अगर इमेज है तो इमेज पे आ जाइए, इमेज में दिखा देगा आपको. और अगर
सिंपल टेक्स्ट है तो ऑल पे चले जाइए, वो आपको 46 रिजल्ट्स आपको दिखाई दिए थे. सो सिंपल, नथिंग डूइंग, हो गया टेक्स्ट सब कुछ, वेरिफिकेशन फिनिश, डन. थैंक यू सो मच. दैट वाज इट. Thank you. Thank you. Certainly very interesting. I think some things were very informative, particularly वो जो inverted commas में डालने का, I was not aware of it. Inverted commas में डालो, then you can get that exact sentence. जी. That is very informative. And I think if there are some questions, then we can go in for that. If there are questions from students and from other. Dr. Amar Rao is there. He's very much IT person. And I think, yeah, if he has some query or something, maybe he can put it, or any other student. Dr. Amar Rao, anything? You're muted, I think. Okay, let me change the settings now. I am Okay, all right. Okay, you're muted. till now nobody was allowed to unmute himself or herself. Now I have given you the right. So you can unmute yourself and ask the question. Right. So thank you, sir. A really wonderful session. The last part, the InVid Chrome extension, I just added it. So I was not aware of that. So the point is that key image text, but when it comes to subjectivity of any news, these tools, for example, the tool which you developed, is a superb tool. I'm going to use it. But what about the deep fakes? Because artificial intelligence is creating deep fake videos. Hard to tell what is real and what is not. So can we keep up with a change in the technology? The subjectivity with journalism or the journalists, they have to keep in mind. Yeah, so very good question actually. As a fact checker and fact checker trainer, well, these questions, they cross our mind quite often, right? So the answer is that right now we don't have that much sophisticated technology to catch the deep fakes, right? But yeah, first draft, if you enter Google first draft trainings, right? So they are a non-profit organization based in US, which develop different tools in the softwares to help people to find misinformation themselves. So they regularly come up with some kind of ideas, right? But yeah, you are very right. It's beyond our reach as far as fact checkers are concerned. But yes, again, for example, if you receive some deep fake videos, video from Biden, right? If Biden is something speaking something very objectionable or something very negative, etc., right? You want to find out. So the simplest method, I mean, organic ways, they are permanent, सनातन है, वो कभी खत्म नहीं होंगे. हाँ, आप क्या कीजिए, यूएस प्रेसिडेंट का, आपके व्हाइट हाउस का आपके पास ट्विटर अकाउंट है, उसको भेज दीजिए एंड जस्ट आस्क प्लीज कि आपने बोला है, राइट? एंड वो लोग उसको कंफर्म कर देंगे. बट अगेन यस, यू आर राइट, सब्जेक्टिविटी. अगर मान लीजिए उनका वीडियो कभी ऐसा कोई गलत चला भी गया है जो कि जेन्युइनली है, राइट, जेन्युइनली लूज ऑफ टंग हुआ है, why he would deny, why he would say कि ओके हाँ वैसे हो गया है. Again, back to the square. So अब इतना ही कर सकते हैं उसमें कि we should avoid watching deep fakes, right? Video messages पे इसलिए अब ज्यादा लोग believe नहीं करते हैं. For example, similar is the case with the screenshots, right? Never ever believe any screenshot, because आप खुद वेबसाइट का कंटेंट चेंज कर सकते हैं टेम्परेरीली, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं लिख सकता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया की कोई न्यूज यहाँ पे आइटम खोल के उसमें लिख लेता हूँ हेडलाइन में, अमर राव कन्विक्टेड फॉर मर्डर, राइट? एंड टेम्परेरीली वो मेरा जो स्क्रीन है उस पर चेंज हो जाएगा. मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा, बाद में वो सर्वर एंड पे तो वही है न्यूज जो एक्चुअल में है, एंड देन मैं उसको वायरल कर दूंगा, राइट? इसीलिए similarity is with the deep fakes. Never believe it. हाँ, आप कंफर्म कर लें उसको, और नहीं होता कंफर्म, then say okay, we could not confirm it. It's okay, simple. Not everything on the earth can be verified, right? Thank you, sir. Okay, any other? Students, any other questions you want to ask from sir? Rohit, Om. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. This तो okay. I mean, ये तो सही है, ठीक है सारा, but chat box इसी से भरा हुआ है.
Hi, sir. हाँ इंदु, Sir, I just want to say कि बहुत ही fruitful ये session था and शूलिनी यूनिवर्सिटी में हम लोगों को बहुत ज़्यादा useful रहेगा because we have a campus radio, Radio शूलिनी, so we are doing a show called Fake Mathyar. तो उसमें हम लोग जैसे PIB fact check को रेफर करते हैं या फिर कोई इनका जो वेब प्रूफ है उसको रेफर करते हैं. So now we have one more कि fact checking को भी हम लोग रेफर कर सकते हैं और जो फिर आपने अलग-अलग चीजें जो बताई है तो बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल रहेगा. सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर दिस. ओके राइट. सो पीआईबी फैक्ट चेक को उतना बिलीव मत करना बिकॉज वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ये रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रहा है यहाँ पे. यस हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो एक सर्टिफाइड फेक न्यूज फैक्ट्री है राइट. मतलब आई हैव मेनी इंस्टांसेस वेयर दे हैव immediately rejected something without investigation, right? For example, you submit some information to them whether it is right or not. Immediately after 2 hours they'll respond, okay, no it is not, and actually that was right. There are numerous cases of that, numerous, not one. So PIB, that's okay, fine, it's from government of India, government में लोगों का trust होता है, fine, ठीक है. But see, we are fact checkers, right? हमारे लिए सब बराबर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या हमारा यूनिवर्सिटी है या हम खुद हैं, हमारे पेरेंट्स हैं. हम सिर्फ फैक्ट चेकिंग की बात कर रहे हैं, चाहे उसको कोई भी है फिर, राइट? आपको जान के हैरानी होगी. आपको मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूँ यहाँ पे. ऐसा बोलते हैं कि उसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि शूलिनी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से लेके जो गेट पे गार्ड खड़ा होता है ना, उसके बीच में सभी लोग आ गए, राइट? ऑल ऑफ देम आर इक्वली वल्नरेबल टू द डेंजर्स ऑफ द फेक न्यूज. दिस इज गूगल्स रिसर्च फाइंडिंग. मतलब everybody is vulnerable irrespective of the social status, money, power, etc. everything, right? So फिर बात ही खत्म हो जाती है उसमें, isn't it? निधि राजदान जैसी एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ एनडीटीवी को 6 महीने तक बेवकूफ जो बना सकता है कोई, फिर क्या बोलने को रह जाता है? इसीलिए फैक्ट चेकर का जो माइंड होता है ना, वो किसी पे विश्वास नहीं करता. उसको क्या चाहिए? उसको प्रूफ चाहिए. प्रूफ है तो बता दो भाई, ठीक है, ओके, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नो. यस सर, इसीलिए मतलब जो आपने अलग अलग चीजें बताई है कि इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, इन सारी चीजों से हम और भी इसको अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं. हाँ, वेरीफाई कर सकते हैं. यस, वेरी गुड. और ऐसा नहीं कि आपने अपलोड किया और सामने कुछ आ गया, हाँ शूलिनी यूनिवर्सिटी है, एबीसी यूनिवर्सिटी नहीं है. नो, आप उसको क्रॉस चेक करें अलग अलग एंगल से. आप हिमाचल में किसी मतलब ओके शूलिनी यूनिवर्सिटी, थोड़ा हिंट मिला आपको, फाइन. तो सोलन में किसी को जानते हो, उसको फोटो भेजो व्हाट्सएप पे, भाई देखना है शूलिनी यूनिवर्सिटी है क्या, देख के आना जाके. इट मींस आपने उसको क्रॉस चेक किया, राइट? ठीक है ना? तब जाके आपको आपका फैक्ट चेकिंग सही माना जाएगा. अदरवाइज आपको पता है इंटरनेट पे तो वैसे झूठ फैला हुआ है. सो आपने अपलोड किया, मान लो एबीसी यूनिवर्सिटी के नाम से 10 लिंक आ गए, अब वो सारे के सारे झूठ हैं. पीपल आर राइटिंग ब्लॉग्स. गूगल को इतना पता नहीं है. गूगल तो सिमिलर टेक्नोलॉजी, सिमिलरिटी इंडेक्स पे काम करता है ना. आप समझे इंदु मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर. मतलब इट इज सर्चिंग ओनली दोज मिस इन्फॉर्मेशन वाला ब्लॉग्स, तो वो तो वही कहेंगे जो आपको बोला गया है एबीसी वाले के बारे में. इसीलिए उसको क्रॉस चेक करना है. हाँ, इसीलिए नेवर बी इम्प्रेस्ड बाय द नंबर ऑफ रिजल्ट्स व्हिच यू गेट ऑनलाइन अबाउट ए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. जितने ज्यादा उसके लिंक मिलेंगे ना, उतना ज्यादा चांसेस होगा कि वो फेक होगी, बिकॉज फॉल्सहुड है वो ज्यादा ट्रेवल करता है, सच जो है वो थोड़ा ट्रेवल करता है. सही बोल रहे हो सर. लोग सोचते हैं तो 20 लिंक्स पे है तो 30 लिंक्स पे है, इट इज बाउंड टू बी ट्रू. नहीं, उल्टा है, मामला उल्टा. हाँ सॉरी, कोई कुछ कह रहा था यहाँ. You talked about similarity index. Then though it's very easy to manipulate, for example, a very small thing, a very small company, or you can say a very small university, right? Because for example, if I ask all the people present here, right, just to publish some kind of news, for example, if I publish a fake news and you just have to like that tweet, you just have to like that social media, so means similarity index will jump up. एक बार अब दोबारा रिपीट करो, सॉरी.
I couldn't get it. ये आवाज कट गई थी मुझे आपकी. Okay, so the point is that I am saying it is very easy to manipulate very small number of you can say sets of people or a set of companies. For example, if I start a small company, not very renowned, right? But if I ask all of you to search about that company on Google, it will jump up their similarity index, and Google will start showing it. So similarity index works in that way. That's what can I get from your. हाँ, yes. See, आप इसको इस तरीके से समझें कि as far as text matter is concerned, so the text entered in the double quotes will be searched for the continuity of that the words on the different websites. And if it doesn't matter the website is government, private, blog, fake website, misinformed, if Google को कुछ भी नहीं पता है, right, it will just show those results कि वहां से मिला है. Now it is your headache afterwards, right, to verify, okay, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, ये विश्वसनीय हो सकता है, right, ये शूलिनी यूनिवर्सिटी का है तो क्रेडिबल है, ये फलाना एबीसी यूनिवर्सिटी का इसका नाम ही नहीं सुना तो वैसे ही है. आप समझे मेरी बात को, राइट? टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन है, इट कैन कंप्रेस द रिजल्ट फॉर यू, आफ्टरवर्ड्स इट्स योर टेक. उसके बाद आपको देखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रेडिबल है या फलाना सोर्स क्रेडिबल है. तो इसलिए ये टेक्नोलॉजिकल काम बिल्कुल नहीं है फैक्ट चेकिंग का, ये माइंड से ज्यादा रिलेटेड है इसका. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? या मानसी? No. Okay. Sir, excuse me, sir. Om. Sir, all is understood about fake news, sir. But could you please tell us some reliable website for data? Like if we are in a debate with someone, like so if they tell us that this government has started 14 aims, but none of them are up and running. So where do we show them the reliable source? See, now the answer is very subjective because you can go to Google and do a random search, and then you search out the most reputed one. For example, Ministry of Health, they must be having this kind of information, right? Or then you can go to any, you can find out the list of aims in India with their phone numbers, right? So these kind of random tricks will do the things, right? So as far as if you consider the government data credible one, then yes, there is a website data.gov.in, but that data is in the Excel format and all the census data, this data, sanitation data, so many other data. But for your kind of thing, Google is the best, right? Just enter and focus on the results, a few results, and then find out the credibility of each link. That's the challenge. Yeah. Thank you, sir. Okay. So I think, should we close then, Ranjana? Yeah. So thank you so much for taking out your precious time, because we know that you are already occupied with the work already. So thank you so much for enlightening us with this wonderful session. And our students would love to stay in touch with you, and like queries are insatiable. So we would definitely like to reach out to you. Thanks a lot, sir. Yeah, sure. I'm writing my mail here, and along with the phone number. If you want something more than this, just please let me know. That's 46589. 46589. Okay, there's a phone number and the WhatsApp number. And let me tell you, on 14th May, right? Coming 14th May. We are having a 3 hours extensive training program from US, on which I am one of the trainers. There will be 2 sessions, 1.5 घंटे की होंगे, and that is for the vaccination check, right? The misinformation floating around as far as vaccination is concerned, and that has got mind-boggling information. Yeah, आज एक session था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ.
that is simply superb, कमाल. हाँ, थोड़ा सा time ज़्यादा है उसमें 3 hours, but you will not repent, I tell you, right? So 14 May का आप ध्यान रखिए, Haryana, my university is one of the hosts along with the data leads and Google News Initiative India Training Network, right? So make it a point to attend that, and you will get to know so many things. And Amar, there will be information about so many training programs. Like you can, without leaving your home, you can get the training, world-class training, free of cost, as far as fact checking is concerned, while sitting on your laptop, right? Free of cost, no money involved. And after that, you can apply for the newspapers fact checking job. So you must attend that 14th May. I'll send you the registration link. So that will be good. Yeah. Right, sir. Chalo, thank you so much, Vipin sir. And I'll see you personally someday. Thank you very much. Yes, certainly. I look forward to meeting you. And thank you so much. It was very, very informative, very interesting lecture. Hope to see you more often. Thank you. Thank you. Thank you to so much, all. sir. Okay. Bye-bye, Amar, Indu. Bye-bye, Mansi, Thank you. Harshita, Thank you, Pragya. sir. See you, Om. See you on 14th May. Sir. Bye-bye. Bye.